You write, he gave the concept in his paper. If you write, उसके बाद the basic concepts were parallel retreat, second, third, फिर then you write his theory, टाइम ही नहीं मिलेगा. सो कहाँ पे कैसे फ्लो चार्ट्स, अगर ये पूछा भी नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है वुड की थियरी इन 250 वर्ड्स पूरा लिखो, बट अगर क्वेश्चन आता है इन 150 वर्ड्स, make this diagram, it is saving your time. Fine, it is not an important part of the answer, but examiner knows that yes, you know the subject. Fine. Next, the bare free face, the bare free face, the bare free face is converted into the convex, is converted to convex, into the convex surface or convex slope. Converted into the convex slope. Understanding this? Next, with the march of time, with the march of time, or along with the time, with the march of time or with the time, the debris becomes finer. The debris becomes finer. Which can be removed, which can be removed by the river, giving rise to the basal, what, convexity or concavity? Basal concavity, giving rise to the basal concavity. Giving rise to basal concavity. And thus, the slope consists of 3 elements. Thus, the slope consists of 3 elements as shown in the figure. The slope consists of 3 elements as shown in the figure. अंडरस्टैंडिंग ये यहां तक कैसे बना? द थर्ड डायग्राम ऑन पेज नंबर 285 ये हमने बनाया है. And so keep page number 285 open, and this is what we have made. The only thing is उसने वो पूरे उसमें एक ही डायग्राम दिया है. We have broken as per the relevant points. So एग्जाम में ये टेक्निक अच्छी है, because examiner then looks at your diagram and knows what is the flow of your answer. अब आगे क्या होगा? This slope will keep on extending. Fine, this slope will keep on
extending. That is what is shown in the diagram, concave. Why it will keep on extending? Concave का slope, because it is washed away. इसलिए it is also known as wash slope. Getting it? So the last point, the slopes will continue to evolve. The slope will continue to get evolved, full stop. The basal concave slope will grow. The basal concave slope will grow, in the bracket wash slope. The basal concave slope will grow, in the bracket wash slope, at the cost of rectilinear slope, at the cost of rectilinear slope, full stop. With time, the entire landform will be converted into low-lying convexo-concave surface, low-lying convexo-concave surface. Fine, this is what his theory is. Very simple. देखो, हमेशा याद रखो, in normal words, ये ऐसे slope बना, it falls, regolith is collected at the bottom, so slope पीछे गया, parallel retreat in the first step, फिर regolith results into formation of a constant slope. Constant slope कब होगा? When this comes here, no. When this comes here, no. When this comes here, no. Constant slope will be formed when there will be no free face. The entire slope is constant slope. उसके बाद ये वो कहता है कि the free face will become convex. First criticism. यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं बना? Free face should have become convex here only. Why it should wait till here to become convex? फिर वो कहता है कि rectilinear slope बनेगा. And end में वो कहेगा concave slope बनेगा. Second criticism. जरूरी नहीं. जैसे जैसे sediments गिरते जाएंगे और टूटते जाएंगे तो break होते जाएंगे. And depending upon what weather and what kind of a rock it is, concave slope यहाँ पे भी बन सकता है. Suppose it is going to take 100 years to form this, तो क्या concave slope कहेगा नहीं, अभी तक constant slope बना नहीं, so I cannot form. Order of precedence में पहले constant slope आना चाहिए, फिर ही मैं बनूंगा. No, it can form here also. That is the second criticism.
Getting it? Fine. So he could not explain why convex concave slopes are formed only at the end stage, why they cannot be formed here. Good thing about his theory, he says slope development depends upon climate, structure and process. Getting it? Second good thing about his theory is he gave the concept of elements of a slope, and these elements of a slope are, it explains how any slope why there is convex, why there is constant, why there is a concave slope. Third good thing about his theory, it is easiest to understand. कोई अपलिफ्टमेंट का झंझट नहीं, कोई डाउन कटिंग का झंझट नहीं. अगर सिर्फ स्लोप्स को ही पढ़ना है तो इस थियरी इज बेस्ट कि हाँ ऐसे अगर स्लोप है तो ये ऐसे क्यों बना. द इजिएस्ट. फाइन. कंक्लूजन, उसका बेस्ट contribution to the field of geography is slope has 4 elements: convex, concave, this thing. Fine. Next आएगा king. पैरेलल रिट्रीट कहां से उठाया है? वुड से. एलिमेंट्स ऑफ स्लोप कहां से उठाया है? वुड से. पैरेलल रिट्रीट कैसे होगा स्लोप का? बाय वर्टिकल डाउन कटिंग. वो कहेगा वेदरिंग नहीं, बाय वर्टिकल डाउन कटिंग. किससे उठाया? डेविस से. एंड इन द ओल्ड एज कहेगा किंग, मतलब फिर से डेविस का कंसेप्ट. ही सेज कॉनकेव स्लोप्स आर गोइंग टू रिप्लेस द कॉन्वेक्स स्लोप. किससे लिया? पेंग से. फाइन. नहीं, any, but his theory starts from free phase. According to his theory, free phase can be formed due to erosion or due to faulting. So he's starting with faulted tectonics. That part is made from faulted tectonics. So faulted tectonics नहीं यूज करोगे. Tectonics means endogenetic movement. Endogenetic movement is faulting, folding, कुछ भी. His theory starts from faulting or from erosion. Yeah, faulting. ये स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू फॉल्टिंग. फाइन. क्रिटिकल इवैल्यूएशन. He considers that slope development will depend upon climate, and slope depending upon the climate may or may not have all the elements. Second, his fault lies in the transformation of free face into convex surface and the concave surface only in the last phase of slope development. मतलब in simple words, why convex and concave surfaces are formed in the last stage of the slope development? ये
एक्सप्लेन नहीं कर सकता वुड. And the last conclusion, but the greatest contribution of wood in the field of slope development, is that he defined and gave the concept of elements of slope. He defined and gave the concept of elements of slope. Defined and gave the concept of elements of slope. ये किसकी थियरी है? ये टैंक. समझ में आया आप? स्लोप रिप्लेसमेंट. What is the difference between parallel retreat and slope replacement? Tell anyone. क्या difference है? That is also in the slope replacement. Initial stage में क्या है? क्या है ये? This is slope replacement. ये क्या है? This is parallel retreat. Understanding the fine difference. Starting में दोनों सेम लगेगा और बाद में it is coming down. ओपन पेज नंबर 277. और कभी भी कंफ्यूज हुआ तो ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स पढ़ लेना. योर कंफ्यूजन विल गो अवे. 277. स्लोप डिक्लाइन किसका है कंसेप्ट?
डेविस का. वी हैव रिटन द ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स जिसका क्रक्स दिया है बुक में एज अ थियरी. स्लोप डिक्लाइन में क्या होता है? इनिशियली देयर इज अ मैक्सिमम एंगल एंड देन angle becomes gentle by downwesting. So slope decline, the steepest part of the slope progressively decreases in angle accompanied by development of convexity and the concavity. Steepest part वहां पे लिखो by vertical down cutting, by vertical down cutting. नहीं सॉरी 276 का एंड पार्ट. By vertical down cutting. Steepest part becomes convex and concave. What is slope replacement? Now understand the definition. The maximum angle, fine, decreases through replacement from below by gentler slopes causing greater part of the profile to be occupied by concavity. Fine. बस ये है maximum angle decreases and compare this definition with parallel retreat. The maximum angle remains constant. बस यही डिफरेंस है बिटवीन पैरेलल रिट्रीट एंड स्लोप रिप्लेसमेंट. इसमें द मैक्सिमम एंगल विल डिसअपियर. फाइन. वो रहेगा टिल दैट व्हेन वो डिसअपियर हो जाएगा ये बन जाएगा बॉस-चुंगेन, हैडल-हैंगेन एंड अल्टीमेटली द हैडल-हैंगेन विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ बॉस-चुंगेन. इसमें मैक्सिमम एंगल द फ्री फेस विल रिमेन टिल द एंड. गेटिंग इट? फ्री फेस विल रिमेन टिल द एंड. दैट इज द पैरेलल रिट्रीट. हमने क्या लिखा था? पैरेलल रिट्रीट दिखता है विच पार्ट ऑफ प्लाटू? पेनिनसुलर प्लाटू में. कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में. क्यों? सेमी एरिड कंडीशंस. गेटिंग इट? मैक्सिमम एंगल तभी रहेगा अगर यहां पे नदी नहीं है, सिर्फ डेजर्ट या सेमी डेजर्ट है. सो किंग सेमी एरिड, ह्यूमिड. नदी है, नदी बह रही है इसलिए नदी उसको शेप दे देगी, फ्री स्क्रैप को रिमूव कर देगी. यहाँ पे नदी ही नहीं है, फ्री स्क्रैप वैसे ही रहेगा. तो ओनली डिफरेंस ये दो अगर कीवर्ड समझ में आ गए कि इसमें मैक्सिमम एंगल डिक्लाइंस, इसमें मैक्सिमम एंगल रिमेन्स कांस्टेंट. एंगल ये है 90 डिग्रीज का, ये कांस्टेंट रहेगा एंड तक. ऑब्वियसली द हाइट ऑफ द माउंटेन विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. दिस ये दिमाग में रखो. किंग की थियरी इज वेरी इजी. फाइन. मतलब किंग gave 2 theories: parallel retreat with a free face 276C and parallel retreat without free face 276 का D. यही क्रिटिसिज्म है किंग का. ही विदाउट फ्री फेस इज नथिंग बट स्लोप रिप्लेसमेंट. उसकी थियरी तभी काम करती है जब ऊपर इनसेल वर्ग है. ये क्रिटिसिज्म है उसका. उसको स्लोप रिप्लेसमेंट कहो या वर्टिकल डाउन कटिंग कहो, so background or introduction. L.C. King gave his theory. L.C. King gave his theory as a part of his more comprehensive theory, as a part of his more comprehensive theory of landscape evolution.
सेम पॉइंट में his concept is based on the concepts of Wood, Penck, Davis, Fair एंड हॉर्टन. 5 लोगों से इंस्पायर हुआ था. बट हमारे सिलेबस में ये 3 ही है. वर्टिकल डाउन कटिंग ऑफ द स्लोप्स. किंग कहेगा जस्ट अंडरस्टैंड कैसी इस थियरी है इन द फर्स्ट स्टेज. मतलब ही डिवाइड्स हिज थियरी इनटू स्टेजेस. किससे इंस्पायर होके? डेविस से. डेविस के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? वैली डीपनिंग. किंग कहेगा सो द फ्री फेस इज कन्वर्टेड इनटू वी शेप्ड वैली. फाइन. बाय द प्रोसेस ऑफ वैली डीपनिंग. फाइन. देन ही सेज ओवर द पीरियड ऊपर का पार्ट कॉन्वेक्स, बचा हुआ फ्री फेस, फिर रेक्टिलिनियर स्लोप बनेगा. कहां से लिया उसने? एलिमेंट्स. फ्री फेस तो ऐसे बन गया. फिर सो ही विल से कि फ्री फेस का पैरेलल रिट्रीट होते जाएगा. कहां से लिया? पेंक से. फाइन. वी शेप्ड वैलीज बनेगी क्योंकि उसको ऐसे शेप देना है. उसने डेविस से इंस्पायर लिया. फिर इसको पीछे लेके जाना है इस शेप को, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? उसको बताना है कि डेजर्ट में माउंटेन्स क्यों ऐसे है. फाइन. सो ऐसे माउंटेन्स कैसे बनेंगे? फ्री फेस ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे. उसके बाद फ्री, ये एंगल कांस्टेंट रहेगा, इसकी हाइट डिक्लाइन हो जाएगी. And this is what he says, parallel retreat. So parallel retreat has 2 concepts, back wasting and down wasting. Fine. Back wasting and down wasting. हॉर्टन एंड फेयर से क्या लिया उसने, हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट्स है. सिस्टम्स एनालिसिस वाला है. And systems analysis is not in our syllabus, right? It's only in human geography, ऊपर से. Next point. He gave his theory. He gave his theory as in response to Davis cycle, in which he considered humid temperate regions as normal. Considered humid temperate regions as normal. फाइन. किंग कहेगा नहीं. कौन सा रीजन नॉर्मल है सबसे ज्यादा? जहां पे वो रहता है. It is not arid. His theory does not semi-arid. King considers subtropical, semi-arid और semi-humid दोनों का मतलब एक ही है. Semi-desert and less rainfall एक ही बात है. Semi-arid याद होना चाहिए. It is also known as
semi humid as most normal, as most normal. Basic assumptions. First assumption, he believes basic physical controls of landscape remain same in all climatic conditions. Basic physical control on landscape remains same in all climatic conditions. इसका सिंपल मीनिंग है लैंडस्केप इवॉल्व सेम irrespective of climatic conditions. Second basic assumption, twin process of scrap retreat. स्क्रैप कैसे पीछे गया